Hey guys, welcome back to Drog and welcome back to another video. I hope all of you are doing well. Or with me, I have Guruji today. और Guruji, thanks for doing this. Guys, अभी भी Guruji is recovering from COVID-19. तो Guruji, सबसे पहले तबीयत कैसी है आपकी? Much better. Bhai, much better. Thank you for inviting me again. Much better. Though week abhi complete ho jayenge next Wednesday, but yeah, it's a bitch. It's very bad, guys. Like I think thing was I got COVID-19 after going to a vaccination center, which is indeed very funny. क्योंकि मैं अपना पहला वैक्सीन लेने जा रहा था और मुझे COVID-19 हो गया और पूरे फैमिली को COVID-19 हो गया. So last 2 weeks have been terrible. To be very honest, they have been absolutely very, very bad mentally, physically. Like you would recover after 2 weeks mostly, but mentally recover करना थोड़ा problematic हो जाता है, which I'm still facing. But fingers crossed, I think things will fall into place really soon. तो सबसे पहले तो congratulations आपको. हम कभी अभी वीडियो पे मिले नहीं face to face. चैंपियंस लीग जीत गए. सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? It was unbelievable. It was not like there was still I think there were still some people in the group जो हमको बोल रहे थे कि भाई मतलब जीत ही जाएंगे चैंपियंस लीग फिर बड़ी बात होती है यार. मतलब जितना भी तुम ऑप्टिमिज्म रख लो, थोड़ा एक अंदर रियलिज्म रहता ही है तुम्हारे अंदर कि मतलब क्या हो जाए, क्या हो जाएगा उस रात को, कि हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं. odds were stacked against us, to be very honest. Literally odds were stacked against us. ठीक है, तो it means it was that kind of an occasion, and it was unbelievable because of the player who rose to that particular occasion. ठीक है, it was unbelievable in that scene. मतलब I never believed कि भाई अगर तुम प्री मैच के लिए पूछो कि कौन गोल मारेगा, I would probably laugh at a person who would say that Havertz goal marega. ठीक है, Havertz would score the winner. ठीक है, it's kind of a laughable thing because तुम Havertz को देखोगे तब तक good player, but again not exactly a big game player until that game. ठीक है, until that game. ठीक है, but shit. Like as always, I was so happy to be proven wrong. Such like that. मुझे याद है जब दिसंबर में और वो जनवरी के शुरू में जब अपना वो खराब रन चल रहा था, तो जब लैम्पार्ड का मतलब we saw him leave the club. अभी भी मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत खराब सा लगता है, पर ठीक है. तो मेरे को याद है आपने मेरे को बोला था एक बार कि यार ये हैवर्ट्स की साइनिंग मुझे समझ नहीं आ रही. मतलब प्लेयर अच्छा है लेकिन खिलाएंगे इसको कैसे इसको फिट करेंगे, कुछ कर भी नहीं पा रहा है. फिर कोविड भी हो गया, तो मतलब डिजास्टर तो नहीं हो जाएगा. और अब देखो अपन मतलब वी आर प्रेजिंग हिम एंड ही टर्न्ड अप इन द बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन. मतलब बिगेस्ट गेम इन 9 years इफेक्टिवली. मतलब 9 साल में सबसे बड़ा मैच था. People question that he a Chelsea legend. He has become a Chelsea legend. One game does. People say that एक गेम में कैसे तुम Chelsea legend बोल सकते हो? अरे because you just said ना बाबू कि अभी देख 9 साल में अगर तुम एक चैंपियंस लीग फाइनल अगर जीत रहे हो और चैंपियंस लीग जीत रहे हो, ठीक है, दूसरा ही चैंपियंस लीग जीत रहे हो, फुल हिस्ट्री में तुम्हारे जस्ट विनिंग ए सेकंड चैंपियंस लीग एंड अ सिंगल player's goal is making you win that Champions League, that player becomes an instant legend. There is no doubt about that. It doesn't, like, being a legend doesn't actually depend on the fact that तुम कितनी देर तक खेले हो वो क्लब में, वो और कितनी देर तक तुमने इम्पैक्ट किया है वो क्लब में. That is not a necessary aspect to become a legend. A legend can also be defined by an impact in absolutely one of the biggest games in club history. And I think I have defined that. तो वही चीज है. बिल्कुल. 72 million pounds have been repaid by Kai Havertz. तो साइनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम हैवर्ट्स की बात करी हमने, तो साइनिंग का ही आज हम डिस्कशन करेंगे, और स्पेसिफिकली एक स्पॉट में विच इज द राइट बैक और द राइट विंग बैक पोजीशन. और ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको भी अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि वी वर बीइंग लिंक्ड विद अशरफ हकीमी, and which could have been a youth signing for us. Unfortunately, he is now joining PSG as far as Twitter is concerned and Fabrizio Romano is concerned. बस medical होना बाकी है, but verbally he's a PSG player now. Agreement have been done verbally, all those things. So to begin this discussion, Guruji, do you think we really needed a right wing back given the fact that we already have Reece James and
he has looked untouchable in that position, because we saw that in especially against Manchester City, in all the 3 games that he has played as a right wing back, which is supposedly the best team in Europe right now. So he does not look phased. Technically, he's very good on the ball. He's strong. He's pacey. He is very good offensively. Defensively, he's spot on. We saw that against Sterling in the Champions League final. So, do you think that we really needed right wing back, and that too of a quality of Ashraf Hakimi? Because naturally, he could have, replaced essentially Reece James in that position. Yeah, we didn't need him. I still stand by my stance. We didn't need him. PSG needed him. Like, if I'm talking as a neutral, PSG needed him more, because PSG have a shit history with fullbacks. So I think in their history they've got one quality fullback in Ashraf Hakimi now. So it's kudos to them. But I don't think we needed him, because I'll just go back to how we were with Tariq Lamptey. I'll give that case study, because Tariq Lamptey against Arsenal, and even in one more match that followed that game in that particular season, he was absolutely outstanding. Whenever he was given a chance, he performed. There was no doubt about that. But he was still sold to Brighton क्योंकि हमारे पास उसके लिए जगह नहीं थी. ठीक है, हम like I was one of the most disappointed people when Tariq Lamptey was sold, because अंदर ही अंदर पता था कि यार अगर वो क्लब में रहेगा तो उसकी डेवलपमेंट हैम्पर होगी. He will die down in terms of his ability, and it's you would not want that in an academy talent. And what he's done in Brighton is excellent. Like Brighton, जब उसको इंजरी नहीं हुई थी, उसी विंग पे ब्राइटन के अटैक्स इतने फोकस्ड थे because of Tariq Lamptey. Because Tariq Lamptey sometimes was so further forward and he was tracking back so much. मतलब he's a ball of energy in that particular flank, and we actually let go of that particular player because हमारे पास जगह नहीं थी. ठीक है, उस टाइम पे. Now what we have is a reigning academy player of the season, Tony Livramento. Now, if Livramento is with us, now whatever I've heard and whatever I've read about Livramento, he is made for that wing back position. Okay? He is absolutely made for that wing back position. And अभी हमको एक ऐसा player चाहिए who would be ready to be a squad player. ठीक है, because अगर हमको ये जो स्क्वाड के साथ हमको ट्रांजिशन करना है, even after winning the Champions League, we don't need to necessarily make big name, necessarily, I'm saying focus on the word necessarily, make big name additions to the squad. अगर हमको एक ट्रांजिशन करना है as successfully as we have probably done in the latter half of the season to the new season, I think if we keep the same batch of players, same core group of players in the first team, and probably focusing on increasing the squad depth, that makes sense. And for increasing the squad depth, let's go back to the academy. Let's focus on the good players from the academy. क्योंकि अभी अगर अशराफ हकीमी आता, ठीक है, two things would have happened. ठीक है, Aspilicueta का भी गेम टाइम रिड्यूस हो जाता because of the fact that right center back पे Reece James would be given games, but opposite और एक चीज भी होती, Reece James की भी गेम टाइम रिड्यूस हो जाती. ठीक है, because of the whole rotational policy around Aspilicueta. Aspilicueta is the captain after all, and he didn't put a foot wrong in the last season, at least in the second half of the season. And in the Euros, in the last game, he was absolutely brilliant. ठीक है, Spain के लिए, when he was given a chance, he was beautiful. ठीक है, right back पे, he was shifted to a right center back when they were in position, and he was really good. ठीक है, तो वो back three में अगर हम खेल रहे हैं, Aspilicueta makes perfect sense as well as a Reece James. So when you want both of them to get game time, it's great that you probably push an academy player in on the subs bench instead of Ashraf Hakimi, because Hakimi will not get benched. Hakimi bench नहीं होगा. It will be a Reece James. It will be an Aspilicueta. But again, Aspilicueta का तुम argument ये दे सकते हो कि age is catching up to him. So it's better if we get one more quality player in that particular position. People will give that argument. But let me tell you that with the playing style that probably Tuchel has, अगर तुम rotate भी करोगे right wing back position पे, I think Livramento is a good rotational option. You don't necessarily need a first teamer to be there.
ठीक है. So right now, even if I'm just going further forward with the question here, even if we've not got Hakimi, this whole pursuit behind Adama Traore is absolutely nonsense, because Adama Traore will warm our bench. And if you tell me that Adama Traore is a much better proposition than Livramento, it's wrong. He's not a huge improvement on Livramento. If given a chance, like Mason Mount was given a chance, Billy Gilmore was given a chance, Tammy Abraham was given a chance when under Frank Lampard, Tomori was given a chance under Frank Lampard, all four of them performed. Tomori went on to become like an absolute rock with Milan. Like, to be honest, Tomori ka sale to Milan just थोड़ा सा break कर दिया मुझे अंदर. ठीक है, मुझे भी हाँ, थोड़ा सा ब्रेक कर दिया मुझे अंदर. लाइक दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यही चीज आई थिंक से मैंने और एक भी पॉडकास्ट में बोली थी. यही सेम चीज बात कर रहा हूँ कि हम अपने यूथ प्लेयर्स को, व्हेन वी रियलाइज द फैक्ट दैट दे हैव गुड पोटेंशियल, वी आर सेलिंग देम. वी आर सेलिंग देम बिकॉज वी थिंक दैट भाई ये परफॉर्म नहीं किया, या वी आर स्कैर्ड अबाउट द फैक्ट दैट ये परफॉर्म करेगा क्या फ्यूचर में. ठीक है, और हम ये डर को अगर हम थोड़ा सा लाइक वी बिलीव इन आवर ओन यूथ सिस्टम थोड़ा और ज्यादा, बिकॉज वी स्टार्टेड डूइंग दैट विद फ्रैंक लैम्पार्ड, बट इफ वी सस्टेन दैट थोड़ा और, आई थिंक वी आर प्रिटी सेफ. I think we are a pretty safe club, because I'm not just saying it for the sake of it. We have one of the best youth systems in England. We have one of the best youth systems in England, without a doubt. Let's just stress on that right now, rather than making a major statement on the transfer market. That is my thought, because the major statement transfer market में मार के कर भी क्या लोगे? To be honest, कर भी क्या लोगे? ठीक है, तुम ट्रांसफर मार्केट में मार दिए, दूसरे क्लब तुमसे डर गए. That's all. But look at the other aspect of it. If you focus on youth system for squad depth, to make seamless transition kar paoge to the next season, you don't have to integrate new players into the mix, and you can think about other things to do. The manager can think about other things to do with that particular squad that he has inherited. He doesn't have to worry about the fact that अच्छा भाई ये नया बंदा को सेटल करने के लिए मैं क्या करवा सकता हूँ, because कोई नया बंदा है ही नहीं ज्यादा. ठीक है, कोई नया बंदा तुम ऐसा मेजर प्लेयर को तुम लेके नहीं आए हो. ठीक है, तो तुम you don't have to worry about all of these extra things. You get players who you extremely need, and I think we'll talk about that in the future in this podcast thoda aur. But right now, just answering your question again, briefly put, right back, we have somebody who's right there with us. So yeah. हाँ, और talking about Livramento, तो अभी जैसा हमने देखा है कि he has been only playing in a youth system, under 18s, under 23s. But he's been training with first team also last season. But he trained with the first team. But he hasn't been, right there when you talk about playing for a championship team, a full season, just like what Mason Mount did with Derby County, or Tomori did with Derby County. We are hearing that Gilmore might leave on loan to Norwich. तो डू यू थिंक कि अभी टाइम है, मतलब ही इज रेडी टू बी द स्क्वाड प्लेयर? नहीं तो फिर मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर्स एंड टीम हार्मनी, आई थिंक इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि एक अपना जो बैकअप है, वो रीस जेम्स के लिए जो बैकअप है वो अपनी एकेडमी से है, बिकॉज उसका मेन एम ही है कि ही हैज टू प्ले इन द फर्स्ट टीम, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. और इफ ही इज एबल टू परफॉर्म, तो वो एक सिलेक्शन कंडम वैसे ही बन जाता है मैनेजर के लिए, तो टीम के लिए तो विन विन सिचुएशन ही है. But do you think that he will be able to perform? कि मतलब वो गैम्बल लेना चाहिए उस पे, आप लेना चाहिए I feel. हमने लास्ट सीजन भी हमने काफी गैम्बल्स लिए थे, बिकॉज फोर्सफुली हमको गैम्बल्स लेने पड़े थे बिकॉज ऑफ ट्रांसफर बैन, एंड इट वर्कड. Billy Gilmore is one example. Billy Gilmore was probably untested when he started for Everton, Liverpool, gave those great performances. He was an untested example. So I think lena chahiye, because a lot of youth players and also a lot of our loanees have pretty much performed well in the last season. Not exactly a lot, 2-3, but still they have really performed well in the last season. And I think if you look at the big picture, that's why I said, like, reiterating that point, हम काफी safe लग रहे हैं. ठीक है, from a transition perspective, from a team harmony perspective, हम लोग काफी safe लग रहे हैं. So I think makes sense. और टॉकिंग अबाउट द साइनिंग्स, और अभी जैसा अपन ने डिस्कस किया कि चैंपियंस लीग हम जीते, एंड वी ऑलवेज नीड टू बिल्ड
on the success that we have achieved. So we saw that with Liverpool kahin na kahin ki they were like the top team in Europe for a couple of seasons, close behind Manchester City in one of the seasons. They lost the title by 1 point. 2 seasons काफी अच्छे थे. In one season they won the Champions League. Then the next season they won the Premier League. So, but they did not, invest in their team as much as like a club like Chelsea would do or a Manchester City would do. And this is the perfect time if we are looking at European domination right now. जैसे हमको अगर एक टीम बनानी है तो हमको मतलब अभी टाइम है क्योंकि हमारा कोर जो है बहुत यंग है प्लेयर्स का. क्योंकि 2012 और अभी जो चैंपियंस लीग सक्सेस है उसमें यही डिफरेंस है कि वो दैट वाज एन एंड ऑफ एन एरा, दिस इज अ स्टार्ट ऑफ एन एरा. बहुत सारी साइनिंग्स का तो पहला ही सीजन था ये, वर्नर, ज़िएच, हैवर्ट्स, चिलवेल. तो डू यू थिंक कि necessarily you need world class signings to be backups of what you have already? मतलब सिलेक्शन हेडेक होना चाहिए जैसा मैनचेस्टर सिटी की टीम में. लाइक इफ यू सी कि उनका जो फॉरवर्ड्स में डेप्थ है, मारेस, स्टर्लिंग, फेरान टोरेस, गैब्रियल जीसस, अग्वेरो लास्ट सीजन तक, नाउ ही इज मूव्ड ऑन टू बार्सिलोना. तो डू यू थिंक कि वी नीड प्लेयर्स लाइक दिस? क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड्स की भी बात करें तो डेफिनेटली वन ऑफ द थ्री विल लीव. पुलिसिक, ज़िएक एंड हडसन-ओडोई. आई डोंट थिंक कि all three of them will stay because of the game time. Pulisic will stay definitely because we saw him he came on as a substitute, late substitute in the Champions League final also. Ziyech and Hudson-Odoi, I am Ziyech के लिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है. मतलब Hudson-Odoi ठीक है, बायर्न से इंटरेस्ट है उसका, he can be deployed as a right wing back also as a backup to Reece James, जो अपन टॉपिक डिस्कस कर ही रहे हैं. Correct. But how do you see Ziyech's situation? I think Ziyech, I still rate him, but he's not settled well with the team yet. ठीक है. आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड विद ज़िएक की एक दो परफॉर्मेंसेस उसने जब अच्छे दिए थे उसके बाद उसको बेंच करा दिया. ठीक है. तो वो जो सिंक रहती है एक प्लेयर की इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन गेम्स एंड देन कंटिन्यूइंग विद दैट पर्टिकुलर प्लेयर, वो ज़िएक के साथ कम रही है in comparison to other players in the squad. ठीक है. Because the extraordinary faith that Thomas Tuchel has shown with Timo Werner, probably if उसका आधा भी faith probably अगर Tuchel ने Ziyech पे दिखाया होता, I'm not saying guaranteed we would have seen a different picture, but थोड़ा chance था. Because I feel that Ziyech has still not gelled with the team in terms of a tactical perspective. He doesn't understand other player ka positioning as well as probably like a Mason Mount does, or probably like Christian Pulisic sometimes does, because Christian Pulisic again is pretty good at linking up play. Okay, so I think that is what is lacking with Hakim Ziyech with the current setup, and I too am pretty scared that he would be a player who leaves the club currently, because जैसे तुमने बोला कि we would look to rebuild our squad for the next season, and if we have to look at major signings like a major signing like Erling Haaland, so I think freeing up the wage structure is one way to go about it. ठीक है. And I think that is exactly why I know that Callum Hudson-Odoi is on a very heavy contract, but I don't think so he would be relieved because of the fact that वो इतना versatile है, right wing back भी खेल सकता है, and he's a homegrown player. ठीक है. तो एक homegrown player को एक registration में in terms of registering for the Premier League, it makes perfect sense that you don't let go of a homegrown English player. ठीक है. So that is why Callum Hudson-Odoi makes perfect sense that he stays, and I think that is why Hakim Ziyech leaving is a more realistic option for Chelsea, because if you have to get Erling Haaland and the wages that Mino Raiola is demanding for him, you would probably need to take some really bold decisions with this club, and Ziyech could bear the brunt of it. So वही चीज है. Striker तो आएगा, even if it's not Haaland. मतलब the kind of rumors that are coming in, Lewandowski becomes the next priority. But I'm sorry to butt in, but just one more point. जो मैंने एक चीज बोली थी ना कि अभी देख Jadon Sancho is too close to Man United. ठीक है. With the recent rumors that we are hearing about, he's very very close to Manchester United right now. And again, I don't think so Dortmund would sell both their star players in the same window. That's exactly why, because before this, when the whole Erling Haaland discussion was happening, मुझे लगा कि
चलो ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा मीट हो सकता है, बिकॉज अब्रामोविच इज वेरी एम्बिशियस मैनेजर, कुछ भी करके कुछ लाइक लेके आ सकता है, थोड़ा सा मीट हो सकता है, बट नाउ आई रियली बिलीव एटलीस्ट ऑलमोस्ट 90% to 85% श्योर कि हालैंड नहीं आएगा, बिकॉज द फैक्ट दैट डॉर्टमुंड विल डेफिनेटली नॉट सेल बोथ देयर स्टार प्लेयर्स इन द सेम विंडो. I don't think so they will do that. There is no chance of that happening. For me, there is no chance of that happening. If that happens, great, beautiful, lovely. ठीक है, somehow that happens, great. But I'm not expecting it. वही चीज है, ठीक है. और talking about the midfield situation, अब अगर Gilmore is leaving on loan next season, तो do you think कि मतलब मिस्टर राइस में जो हमारा चावल आएगा तो दही चावल खाएंगे मस्त से. और that Chouameni from Chouameni, yeah. Lyon. But I think Declan Rice makes perfect sense. Monaco. I think Declan Rice makes perfect sense. We have been behind him for so long. ठीक है, हम लोग काफी देर से उसको कोट कर रहे हैं, and it's very evident with whatever he's doing social media पे कि he wants to come to Chelsea. ठीक है, he's the Chelsea guy, and if you're buying such a player into the team, it makes a manager's job very easy to probably seamlessly integrate into the team and to what the mentality of the club actually is. So वो चीज बहुत अच्छी रहेगी टुखल के लिए, and I think what for Declan Rice, I believe that जो भी पैसा हो दे दो, because of the fact that you're getting an English player first of all. ठीक है, yes, Conor Gallagher मैं McGregor बार के सोच रहा था, but anyways, Gallagher जब you'll get him back right now, you'll get back Ruben Loftus-Cheek, but again Ruben Loftus-Cheek, I had huge expectations from him, to be honest. I had huge expectations from him after that Europa League campaign. I was like, this guy is going to kill it. I'm going to have faith in this guy, and he's going to like light up the Premier League. Fulham ke sath he was just very underwhelming the last season. I don't think so. Scott Parker played him at the position that probably Tuchel would like to play him with Chelsea. He like consistently उस पोजीशन पे नहीं, उसको फॉल्स नाइन खिलाया भाई बहुत टाइम के लिए, which was pretty very very surprising. But I think not surprising exactly, because he is built in a very physical manner. He was trying to test that particular position with Ruben Loftus-Cheek, which didn't work. He's kind of played in that position with Chelsea 2-3 game में as well, so which is like it should have worked at least for Fulham, but then again it didn't. And even when he was dribbling with the ball, he was attacking those half spaces, he didn't look very convincing enough with Fulham. And I think if we have to let go of a player right now, and if you give me an option that Gallagher or Ruben Loftus-Cheek, it would be Ruben Loftus-Cheek, because sadly that is the reality of the situation, because Chelsea is such a demanding club. तो अभी अगर हम चैंपियंस लीग भी जीत गए हैं, we would require nothing but informed players in our team, and I think Gallagher was absolutely outstanding with West Brom, so it would make no sense for Gallagher to be sold. And I think if we have to get some money, we would probably Ruben Loftus-Cheek के लिए we would get around minimum what we would get for Ruben Loftus-Cheek would be 45 to 50 million. Minimum. That's what we would get for Ruben Loftus, because he has age on his side. He's a good hyped up player as well. ठीक है, और अगर Dominic Solanke can go for 20 to 25 million, why can't Ruben Loftus-Cheek be going for 40 to 45 million? So I think that makes perfect sense. And midfield के बारे में, back to Declan Rice. When you have Jorginho has had an outstanding tournament so far. ठीक है, shit. ठीक है, but you need to call water. ठीक है, but so that's why Jorginho has had an outstanding tournament so far. Billy Gilmore has had an outstanding tournament so far. Billy Gilmore will definitely be looking to move currently. So I think if you're looking for a person to probably replace Billy Gilmore का tenacity, stamina, and उसके box to box वाली presence, Declan Rice makes perfect sense. Makes absolutely perfect sense. And we have a player who's actually
like increasing a squad depth, that is McGregor बाबा क्यों बोल रहा हूँ, Gallagher, ठीक है, Conor Gallagher, ठीक है. So he's obviously increasing a squad depth. So I think we have 5 proper midfielders there instead of the 4 that we were consistently rotating around, and it just is a better proposition for us right now in comparison to the previous season. So yeah. हाँ, क्योंकि अगर if you are wanting to go to a back 4 कभी कुछ गेम्स में, जैसे लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट यू नॉट नेसेसरीली नीड टू प्ले बैक 5, तो लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट इफ यू नीड मोर प्रेजेंस इन द मिडफील्ड या फाइनल थर्ड में, और आपको डिफेंस पे इतना फोकस नहीं रहना और एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर चाहिए आपको, तो दिस डेप्थ मेक्स परफेक्ट सेंस कि इतनी डेप्थ तो आपके मिडफील्ड में होनी ही चाहिए. करेक्ट. एंड स्पेशली talking about the center back situation also, we are being linked with, वो तो कह रहे अपन चेल्सी हैं तो अपन तो सारे प्लेयर्स से लिंक होंगे, अपन तो जैक ग्रिलिश तक से लिंक हो गए जिसकी अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है. हकीमी से तो ऑलमोस्ट अपन मतलब बिड ही मार दी थी उस पे, तो हो गया नहीं. वो आई थिंक हिज वाइफ परसुएडेड हिम टू जॉइन PSG. हाँ. Now talking about the centre back situation, I read on Twitter yesterday कि Jules Koundé is identified as an option for Chelsea. Jules Koundé from Sevilla, if the viewers don't know, he's a centre back at Sevilla, had an absolutely fantastic season with them. Then Rafael Varane, no introduction needed, starter for France as well as Real Madrid, their linchpin in the centre half, was injured quite a few times this season, but he is a good centre back, one of the top centre backs right now. So do you think कि again talking about the wing back position, centre back में भी अपन को कोई चाहिए, क्योंकि Zuma is not someone who will like to play as a second fiddle, to stay on the bench for a long time. He has had good games, I'm not denying that. Atletico Madrid second leg, he was absolutely magnificent. But Thiago Silva again, wrong side of 30s, early 40s effectively. 38 के हैं वो, तो he cannot be trusted to play all the 40-38 games, whatever you have in the season. Maximum you can get out of him is 20 to 25 games. सही में. ठीक है, तो Zuma then will not like to be the second fiddle. So और जब तुम back 4 भी खिला रहे हो ना, I don't think so Thiago Silva fits well into a back 4. ठीक है, Thiago Silva would need cover. ठीक है, बट वही मेरा सवाल है कि बैक 4 वाला सेंटर बैक है कौन अभी अपने पास, मतलब बैक 4 वाला I think Christensen and Rudiger is the pairing that I will go for first team. They know a back 4. ठीक है, I'm not discounting Thiago Silva here. Thiago Silva is one of the best defenders that we have currently, but when it comes to a back 4, I think so Christensen and Rudiger make perfect sense. ठीक है, back 3 obviously Christensen, Rudiger, Thiago Silva. ठीक है, but just coming back to your point only, Kurt Zuma, I don't think so he cuts it. ठीक है, I don't think so he cuts it. हम लोग at least I'm not talking about the group in totality, I'm just talking about myself here. मैं बहुत डर जाता हूँ जब भी Kurt Zuma खेलता है. ठीक है, एग्जैक्टली. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहनी चाहिए यार एक सेंटर बैक के साथ, एक कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहनी चाहिए एक सेंटर बैक के साथ. यस, ही हैज हैड अमेजिंग गेम्स. क्रिस्टल पैलेस वाला ब्लॉक कम्स टू माइंड. ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम टू माइंड, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम टू माइंड व्हेन इट कम्स टू सम एब्सोल्युटली हॉरिबल मिस्टेक्स. ठीक है, like he's like horribly, he's pretty bad on the ball. ठीक है, he's just pretty bad on the ball, pretty shaky on the ball. ठीक है, and वो उसका distribution when it comes to on the ball recently has been like pretty shaky. ठीक है, and वो सब चीजें डरा देती है तुमको. So that's why we need a center back who can tell you that ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई, सब सही है, ठीक है, we'll handle things. So I think that's हाँ, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि अगर एक सेंटर बैक आएगा, मतलब the names that we spoke of, तो Thiago Silva becomes a backup. और उसमें आई थिंक थियागो सिल्वा को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा बिकॉज ही नोज हिज फिजिकल लिमिट्स. तो जैसे मिकी माउस कप के गेम्स हैं और जैसे एफए कप के जो अर्ली गेम्स हैं, देन इफ वी हैव द बिजी पीरियड इन द क्रिसमस टाइम या दिसंबर में जैसे 6-7 गेम्स होते हैं, उसमें 3 मैच Thiago Silva can easily play, 3 matches other center back can play. Or Thiago Silva also will not have a problem being a backup क्योंकि he has done everything now with Chelsea in his first season. The only trophy left in his resume was Champions League, and he has done it, and he was a big part of that campaign. So I don't think Thiago Silva should have a problem because as it is, it's his last season with Chelsea. Yeah, because he won't be extending. I don't think Chelsea will be extending his contract further. Exactly. I don't think this is the last season with Chelsea for sure. Okay, but again,
comes back down to the question: do we need a center back? Because because we still didn't talk about the fact that probably an Aspilicueta can play a center back. Reece James can play a center back. Reece James can play as a center back. Yes, Reece James can probably play as a 3-man center. I don't think so. Reece James is capable of playing a 2-man center back wala role, to be very honest. Okay, but Aspilicueta is. I feel Aspilicueta is capable of doing that. Okay, so if we move to probably a back four, I'm just saying if. Okay, because there are a lot of probabilities here. We may just stick to a back three. We probably move to a back four. But I'll just tell you the number of center backs that we have. We have Christensen, we have Rudiger, हम लोग का Aspilicueta है, हम लोग के पास Thiago Silva है, Kurt Zouma I'm not counting still, ठीक है, Reece James है, ठीक है, as a right center back, and obviously this guy, if I'm talking about the youth system as well, there was a crazy center back in the youth system, man. This guy that Mark Gueye, I forgot. Oh भाई कैसे भूल गया उसको. हाँ, Mark Gueye, yeah. And Javier Muamba. Yes. He had a beautiful season. मैं उसका highlights भी देखा था. क्यों चाहिए center back? क्यों चाहिए center back? 7 लोग गिन लिए हम लोग ने भाई. 7 लोग. ठीक है, 7 लोग हैं हमारे पास. ठीक है, क्यों चाहिए center back? That's why I think what I've read so far, Chelsea are focusing more on contract extensions right now. Are focusing more on contract extensions rather than on the transfer market. Currently, that is their plan, and that is a good plan to have. ठीक है कि भाई secure कर लो सबको. Even Livramento का भी भाई next summer transfer और next summer उसका contract expire हो रहा है. ठीक है, so he उसका valuation down हो जाएगा. So that is exactly why they are also focusing. If they give chances to Livramento will not go. Livramento will sign a contract, and Livramento is not signing a contract still. ठीक है, सो वही सब चीजें हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस पे अभी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रूडिगर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे भी बातें अभी भी, ऑल्दो ही हैज ऑफर्ड थॉमस टुकल हिज थिंग कि भाई अभी वो नहीं जाएगा, उसका हार्ट चेल्सी में ही है. ही टोल्ड थॉमस टुकल दैट. बट लोग बहुत कुछ बोलते हैं यार, बस वो जस्ट साइन ऑन द डॉटेड लाइन. दैट्स व्हाट यू नीड एज अ फैन. दैट्स व्हाट यू नीड एज अ फैन. तो just until we get news that भाई ये सब लोगों ने contract extend नहीं किया, तब तक we just can't be just sit back and say that चलो सब सही है. अभी just contract sign कर दो. Once the contracts are signed, then probably looking at the transfer market is a good thing to do. And talking about midfield, एक और नाम याद आ गया मुझे जिसकी अपन ने बात नहीं की, ईथन एम्पाडू. Technically stellar player. Michy Batshuayi स्ट्राइकर की अगर अपन बात करें, stellar player. Michy Batshuayi नहीं यार, मतलब हो गया. Michy Batshuayi नहीं यार. I don't think so we are that club anymore that needs a Michy Batshuayi. We are Champions League जीते भाई. And one more interesting thing कि Thomas Tuchel will also look at Timo Bakayoko in the preseason. Oh my God. I think so. He look to offload Timo Bakayoko. Like I'm very sure he'll look to offload Timo Bakayoko. Like he's saying अभी जुलाई से वो लोग और Chelsea का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा. And a lot of the first team players will not be there because of obviously Euros and Copa. ठीक है, so he'll train with these reserve loanee players only. Okay, he'll train with these loanee players, reserve players who haven't been called up. I think Bakayoko is one of them. He'll take a look at him and then he'll say, "Shit, यार क्या भौकाल मचा दिए भाई ट्रांसफर मार्केट पे." So let's hope कि अपनी ये वाली ट्रांसफर मार्केट डेस्पिरेशन में मतलब ना निकल जाए कि भाई पैसा है, खर्च कर सकते हैं, प्लेयर्स भी आना चाहते हैं, तो मतलब वो होता है ना, ऑल गन्स ब्लेजिंग, वो ट्रिगर हैप्पी होके निकल गया मार्केट में, जो मिला आजा. बस वो चीज नहीं हो जो 17-18 की ट्रांसफर विंडो में हुआ था. I really pray that doesn't happen. We don't need another Danny Drinkwater. Yeah, please. We don't. अच्छा, और सारी पोजीशंस की बात कर ली, तो फाइनली कमिंग टू द गोलकीपर, आई एम ग्लैड कि वी डिड नॉट गो आफ्टर डोनारुमा. इनिशियल इंटरेस्ट वर देयर. कुछ न्यूज आई थी कि चेल्सी माइट लुक एट डोनारुमा, बट थैंकफुली हमने मेंडी में अपना इंटरेस्ट दिखाया. Do you think I know I'm going back on my words, but it's because I really like that player, really like that keeper. केलर नावास को कितना इंसल्ट किया जाता है यार. ये सब मूव से कितना इंसल्ट किया जाता है. रियल मैड्रिड में कोटिया को लेके आ गया, तो पीएसजी आ गया, पीएसजी में वापस ही परफॉर्म रियली वेल, गॉट डोनारुमा. ऑब्वियसली केलर नावास इज गोइंग टू बी बेंच्ड अगेन. केलर नावास इज टू गुड टू बी बेंच्ड. हाँ, एक्चुअली द थिंग इज कि
जब भी फ्यूचर के लिए सोचते हैं ना, तो मतलब अनफॉर्चुनेटली ही हैज बीन द कीपर ट्वाइस टू हैव टेकन द ब्रंट ऑफ Exactly. दैट। Yeah, good point. मतलब सेम चेक कर्टुआ सिचुएशन हो गई थी अपने जो हुई थी 14 But Czech at 15 that point of time, no, Czech was not as good as Keylor Navas is currently. at that point of time, yeah. At that point of time, he was not that good. His talent was waning thoda sa. Okay. So he was not that good. Keylor Navas is unbelievable still. ठीक है, he is unbelievable still. And मेरे अंदर ये चीज है ना भाई कि मेरे अंदर ये चीज है, if we go for Keylor Navas, ठीक है, if we go for Keylor Navas, I'll be happy, ठीक है भाई, मतलब because you will not get a player like Keylor Navas, man. You will not get. He's so good with ball distribution. He's so good with his reflexes. He's so good in that particular position. He's an impact player. He's like an impact player. Donnarumma is a young sensation. He's a young talent. He's a wonder kid like Kai Havertz. He's an absolute wonder kid. He's proven himself in some really good games as well, but he's had bad games as well. He's had some pretty bad games with Milan, to be very honest. He's had pretty bad games with Milan as well. So that's why Donnarumma के ऊपर जब हम बल्ब शाइन कर रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा था कि मेंडी ने कुछ बुरा नहीं किया, तो why should he मेंडी ने कुछ बुरा नहीं किया, so why should he actually suffer? But अभी Keylor Navas है हमारे पास. Like I think Keylor Navas would again not like to be the bench player. He would like to move. Why can't we go after him? अब वही बात है ना, केलोर नवाज इतना अच्छा कीपर है तो मेंडी को बेंच करना पड़ेगा उसको गेम टाइम देने। हाँ, मतलब वही चीज है यार, मतलब it's just my attraction towards that player which is getting this point across. I know it's unfair on Mendy, but it's Keylor Navas is on the market, and if any other team gets Keylor Navas, थोड़ा बुरा लगेगा यार, because I think there are teams in the hunt for a keeper and who are Champions League contenders, and Kepa is available. Kepa is I think Lazio is interested in loaning Kepa. Yeah, loan. We should send him out on loan. It's okay. पर बैकअप में फिर आप किसको रखोगे, क्योंकि Willy has moved on. Yeah. But the thing is, backup के लिए, like now coming to realistic options, I think we should look in the English Premier League itself. There, we had a good option to probably sign Romero as a backup. ठीक है, he could have been a good backup. Sergio Romero का, अरे Sergio Romero has not gone anywhere, ना? Sergio Romero का तो contract खाली expire हुआ है. I think he has signed with some club within Argentina or something. He's signed, ठीक है, maybe, ठीक है. But anyways, we should look at a player who's from a smaller team, ठीक है, and look at that particular player as a backup keeper and get him in, like how we did for Begovic. ठीक है. Probably वैसा करके अगर हम कुछ कर पाएंगे तो अच्छी बात है. Very nice. हाँ, he is free agent right now. He's a free agent ना? 34 years old. मैं अभी चेक कर रहा हूँ. हाँ, get him then. Simple चीज है. Because I think United में David De Gea just took his place completely, and Sergio Romero was just offered cup games. हाँ, फिर Henderson का भी जो rise था काफी सही था. Exactly. I think Henderson का rise सबसे ज्यादा मतलब impactful था उसके departure के लिए, which is understandable. So I think now Sergio Romero is the second choice keeper. He'll play cup games for a Champions League winning side. What more do you want? So I think it makes perfect sense. I've rated Romero, man. I've rated Romero. He's a good keeper. I've been very, very happy with him. So yeah. But Onana आ रहा है ना Arsenal, तो ले लो बैकअप. क्योंकि जब ये ट्रेड अदर वे राउंड होता है ना, Arsenal to Chelsea, so it somehow works. But Chelsea to Arsenal, I don't know what happens. I don't know how long will Arsenal continue their trade after seeing the kind of players that we have been giving them. नहीं, विलियन के बाद तो I think हो गया होगा कि नहीं भाई, अब नहीं है. और नहीं चाहिए भाई. और नहीं दे सकते तुमको. तुम हमको लूट रहे हो तब से. मतलब ऑब्वियसली फ्री में गया था ना विलियन. हाँ, फ्री में गया था, तो ऑब्वियसली लूटा नहीं, बट एटलीस्ट तुम हमको बहुत, मैं टट्टी भी नहीं बोल सकता, तुम हमको बहुत अजीब प्लेयर्स दे रहे हो. I think Willian had her best season in his 7 years. Last season जो उसका था 1920, मतलब उस स्टैट्स के हिसाब से it was his best season in a Chelsea shirt. मतलब
कि मतलब अगर हम बात करें गोल्स, शॉट्स ऑन टारगेट, असिस्ट, गोल्स, मतलब काफी अच्छा सीजन था उसका. मतलब इतना ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा ये तो मतलब आई डिड नॉट इमेजिन. सेकंड हाफ ऑफ दैट पोस्ट पैंडेमिक वाला टाइम विलियन का बहुत क्रेजी रहा था. पुलिसिक, विलियन एंड जिरू. Giroud. These three guys were These three amazing. were उन्होंने कैरी amazing. किया था पूरी टीम को. Yeah, these three were, we have to give credit where credit's due. तो विलियन वो चीज बहुत सही किया था even in our 2014-15 season if I'm not wrong. हाँ, वो Willian was, हजार्ड का परफेक्ट पार्टनर था वो. हाँ, विलियन was crazy. So I feel विलियन has had his good moments, but नहीं यार, like you can't have विलियन if you want to win the Champions League. ठीक है, you will need an improvement there, and we got an improvement there, which is great. ठीक है, we got an improvement there, but that improvement also didn't work out so well for us. So we had to look at other options. We had to probably look at shifting Pulisic to the right. ठीक है, so that's what we did, I think, because left wing Werner, right wing Pulisic, center forward, false nine Kai Havertz. That is something that we tried to do. So I think that's what happened. So ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं. अभी क्या है ना, इतना सारा स्टार पावर हो गया ना टीम में. समटाइम्स यू मिस प्लेयर्स लाइक जॉन ओबी मिकेल, पेड्रो. मतलब नॉट स्टार, मतलब वो नहीं बोलो यार उनको कि ये वर्ल्ड क्लास है, स्टार है, लेकिन दे विल डू देयर जॉब. मतलब पेड्रो तो मेरे को इतना अच्छा लगता था ना, मतलब इतना बढ़िया प्लेयर था वो. बेस्ट साइनिंग थी वो मेरे हिसाब से. बेस्ट तो नहीं, बेस्ट तो ऑब्वियसली ईडन हजार्ड है इन लास्ट 10 years. और कांटे और हजार्ड में डिबेट रहेगा हमेशा, बट Pedro was a beautiful signing. मतलब वैसी signing. Thiago Silva is an example of smart signing. मतलब Pedro was a smart signing. मेरे ख्याल से हमको striker situation भी, if we are not able to get Haaland, I think we should look into that direction rather than making a statement जैसा आपने बोला, या कोई मार्की signing करें. तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि this squad is sufficient in itself. अगर कोई player आता भी नहीं है, with one or two players, if we are able to promote them from the academy, I think we are मतलब in a good place. Obviously कुछ signings तो होंगी, but do you think कि बिल्कुल चाहिए ही चाहिए अपन को players अभी? मतलब I'll tell you, striker, we also have a good striker in the academy. Not in the academy, who was loaned out to the second division. I forgot his name again. यार second division को loan out किया था उसको, and Vitesse पे खेला था, if I'm not wrong, but I don't know. But we have a striker backup, but again we need a striker still. नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि अपन ऑली वॉटकिंस जैसे बंदे को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं. करेक्ट, वही आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट. वी डोंट नीड अ फर्स्ट टीम स्ट्राइकर. हाँ एग्जैक्टली, हाँ, वी डोंट नीड अ फर्स्ट टीम स्ट्राइकर. मतलब वही चीज हो गई यार, वो अकीमी वाली कॉन्वर्सेशन वापस आ जाएगी. सेम चीज स्ट्राइकर रोल के लिए भी है, बिकॉज ओलिवर जिरू 35, 36 doesn't fit the bill. ठीक है, टैमी गॉन. ठीक है, so you probably have a Kai Havertz and a Timo Werner who can play as strikers, and actually both of them will be playing together almost in every game in the next season. That is expected. Okay, so ideally on the pitch and on the bench, if you look at it from a game by game perspective, तुम्हारे पास bench पे striker ही नहीं बचेगा. ठीक है, तो वही चीज हो जाएगी game by game next season. So that's why we need a striker who can fill the bench. ठीक है, कि जो बेंच पे बैठ सकता है आराम से. ठीक है, तो अगर स्ट्राइकर चाहिए, ऑली वॉटकिंस मेक्स परफेक्ट सेंस. ठीक है, आई हैव ऑलवेज रूटेड फॉर वेस्ट हैम का एंटोनियो. I don't know why people don't rate him. Injury ravaged. अरे भाई, तुम injury ravaged वाला ये मतलब ये argument लेके कितना दूर तक जा पाओगे? Because again, we need a player to sit on the bench. You don't need a player to be the first teamer. So the injury ravaged वाला जो argument doesn't really sit well for a player who's sitting on the bench. समझ रहा है? ठीक है, because obviously if you look at a prospect who wants to be the first teamer, yes, the whole aspect about the fact that kitna injury prone hai, ye makes perfect sense. But now if we want a bench player, if we want a squad player, Antonio fits the bill, bhai. And Antonio is the player profile that Tuchel would love to work with, like absolutely love to work with. Workhorse, strength, hold up play, positioning in the box is outstanding.
अब यार ये सब तो मतलब उसका तो टॉप नॉच ही है ना, डॉर्टमुंड वाले का। हाँ अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ, बट डॉर्टमुंड वाले का जो है ना, डॉर्टमुंड वाले के और एक चीज मैं बताता हूँ। तुम डॉर्टमुंड वाले को 200,000 दे दोगे, ठीक है, 200,000 का तुम ये अर्निंग दे दोगे। कांटे इज करंटली द हाईएस्ट अर्नर इन द चेल्सी सेटअप, हाँ, ठीक है। स्क्वाड हार्मनी पे इतना गंदा इफेक्ट पड़ेगा ना, इतना गंदा इफेक्ट पड़ेगा वंस यू हैव ऑल ऑफ दीस निटी ग्रिटी थिंग्स इनटू द एस्पेक्ट। मैं वही सोच रहा हूँ कि इफ टूकल एंड द मैनेजमेंट हैज अ प्लान इन प्लेस कि ये सब चीजों को कैसे टैकल करना है, गेम टाइम फॉर ऑल द स्ट्राइकर्स, इफ ही इज फिडलिंग अराउंड विद द फॉर्मेशन नेक्स्ट सीजन, वी डोंट नो इज इट अ बैक 4 और अ बैक 3, या फिर मतलब जो ये अपन ने वेव स्ट्रक्चर की जैसे बात करी, मतलब इस सिचुएशन and also Haaland is not good defensively. Haaland was not tested defensively in Dortmund, to be very honest. And when you are playing in that front three in Chelsea, तुमको ट्रैक बैक तो करना ही पड़ेगा, तुमको ट्रैक बैक करना पड़ता है, तुमको प्रेस भी कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग करनी पड़ती है। That's exactly why that was one of Chelsea's good things and bad things last season was हम लोग इतना प्रेस करते थे कि जब once we won the ball, हमारे दिमाग में उतना डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं रहता था कि हम इस बॉल के साथ करें क्या, ठीक है। कि वंस ही वन द बॉल इन द अटैकिंग फेज, बहुत बार ऐसी चीज हुई है, बहुत बार ऐसी चीजें हुई है कि हम मस्त प्रेसिंग किए एंड वी स्पेंट ऑल आवर एनर्जी, ऑल आवर स्टैमिना ऑन दैट, सो वंस ही वन द बॉल बैक, दिमाग सुन हो गया कि भाई क्या करें, ठीक है। तो इसलिए वो चीजों को अगर हमको बैलेंस करना है, वी नीड अ प्लेयर प्रोफाइल हु knows, who is balanced with that thinking, ठीक है। एंड मिकेल एंटोनियो फिट्स द बिल बिकॉज लेफ्ट विंग बैक भी खेला है, सेंटर फॉरवर्ड भी खेला है, ठीक है। सो इफ योर प्लेयर हैज प्लेड बोथ दोस पोजीशंस, लेफ्ट विंग बैक ही खेला ना कि राइट विंग बैक खेला था, राइट खेला था, सॉरी माय बैड, बट राइट विंग बैक, एंड he's played a center forward role, so he knows he's acclimatized to both the positions, so he has a very balanced mentality towards the game, and that's what Tuchel needs in this system that he's playing. So that's exactly why he makes perfect sense why. मतलब अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि अग्वेरो कितनी बढ़िया साइनिंग होती, मतलब अगर हमको फ्री में मिल जाता। एडन जैको इज सच अ गुड प्रोस्पेक्ट, अगर हमको बेंच पे रहने वाले स्ट्राइकर चाहिए, मतलब गुड फिनिशर, एक्सपीरियंस, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी है एडन जैको बहुत एम्बिशियस है, आई डोंट थिंक सो ही वुड सिट ऑन द बेंच। वही चीज है, हाँ ये भी है। तो वो अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली कि इफ एवरीथिंग इज इन प्लेस, कि भाई पता है कि सारी चीजों को, प्लेयर्स के टेंट्रम्स को या जो भी टीम हार्मनी है उसको कैसे मैनेज करना है, टैक्टिकली कैसे गेम टाइम मैनेज करना है, अगर वो सब है, एंड टॉमस टूकल, क्योंकि मुझे इन सब चीज में, इस पूरे सेटअप में सिर्फ एक ही बंदे पे भरोसा है, एंड दैट इज टॉमस टूकल। इफ टॉमस टूकल इज सेइंग कि नहीं आई डोंट वांट हालैंड, तो मत जाओ, होने दो रिग्रेट, ठीक है, जाएगा किसी बड़े क्लब में चला जाएगा, 40 गोल मार देगा एक सीजन में, रहेगा रिग्रेट, बट अभी इट्स imperative कि we trust Thomas Tuchel, and if he wants Haaland then we should go for him, as simple as that. And जो मैंने पढ़ा है ट्विटर पे अभी तक, साइमन फिलिप्स का जितना भी है, मतलब हम पढ़ते हैं, या डेविड ऑनस्टीन जो एथलेटिक में, उन सबने मतलब ये कहा कि टूकल इज अ ह्यूज फैन ऑफ अर्लिंग हालैंड। तो लेट्स सी। तो जैसा दोस्तों हमने देखा आज की गुरुजी ने बोला है, साइनिंग्स की जहां तक बात है, स्ट्राइकर चाहिए, राइस चाहिए, हकीमी नहीं चाहिए, डोनारुमा नहीं चाहिए, तो the only things we need to strengthen, the only areas we need to strengthen is our midfield. Hopefully Declan Rice will and come to Stamford Bridge. I think एक चीज हम भूल गए बात करना, वो if Ziyech leaves, we would still need a right winger. But Hudson Odoi को वैसे ही कितना कम गेम टाइम मिला है। हाँ, I know, I don't know, but it gives you काइंड ऑफ, हाँ मतलब अकेडमी से उठा सकते, बट अकेडमी में कोई राइट विंगर है नहीं। देखो अगर आप विंगर की बात करते हो, प्रोवाइडेड कि अर्लिंग हालैंड कम्स, ठीक है, ज़ियेक इज लीविंग, अर्लिंग हालैंड कम्स इन, या कोई भी स्ट्राइकर कम्स इन, तो स्ट्राइक में आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, हैवर्ट्स और स्ट्राइकर जो भी आ रहा है। लेफ्ट विंग पे आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, पुलिसिक एंड वर्नर कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर। राइट विंग पे फिर आपके पास मतलब हडसन ओडोई रहेगा। तो मतलब अब वही है कि दोनों में से कौन बेंच पे रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये वाला सिस्टम तो खिलाओगे नहीं हर मैच में, वो फ्रंट थ्री रहेंगे, फिर मेसन माउंट कहाँ खेलेगा अगर तीन फॉरवर्ड खेलेंगे, अनलेस यू आर प्लेइंग अ 4-2-3-1। करेक्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि एटलीस्ट
फॉर मोर सिक्योरिटी इन द विंग पोजीशन की सोच लिया अगर एक दोनों में से एक इंजर्ड हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म इंजरी होगी, टचवुड लॉन्ग टर्म इंजरी होगी, ठीक है, तो बेंच पे कौन बैठेगा? मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक यू ऑलवेज लीव दैट वन स्पॉट, वन सिक्योर्ड स्पॉट ओपन इन द बेंच, ठीक है। इसलिए हमारे पास 4 मिडफील्डर्स हैं, ठीक है। करंटली वी हैव 4 मिडफील्डर्स, ठीक है, कैंसलिंग आउट दोस लोनीज, ठीक है। वी हैव 4 मिडफील्डर्स, बट व्हाई वी लुकिंग एट मोर ऑप्शंस? सिक्योरिटी, थोड़ी और सिक्योरिटी बेंच पे, थोड़ा और ऑप्शन बेंच पे, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, प्रॉब्ली इफ यू एक बजट विंगर भी अगर लेके आ गए, बट एक बजट विंगर हु फिट्स टुकेल्स मेंटालिटी, दैट इज व्हाट आई थिंक वी वुड नीड, ठीक है। कि जो डिमांड भी ना करे कि मुझे फर्स्ट टीम में एवरी टाइम डालो, ठीक है। वैसा एक प्लेयर प्रोफाइल को अगर, या वैसा एक प्लेयर को अगर हम लेके आ गए, दैट वुड बी ग्रेट, दैट बी एन ऑसम एडिशन। सो या विलियन बोल रहा था वापस आना चाहता हूँ। अरे नहीं, थैंक्स, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट विलियन, बट I was not talking about any Arsenal player for that matter. चलो ठीक है, चलो फिर आई थिंक लेट्स सी व्हाट हैपेंस। काफी क्रेजी होने वाला है ट्रांसफर विंडो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब कि यू आर सेइंग कि सैंचो टू यूनाइटेड इज ऑलमोस्ट डन। आई एम गेटिंग दिस वाइब कि इट विल नॉट मैटर, अगर हमको हालैंड चाहिए तो वी विल गेट हिम। चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है आगे। ओके गुरुजी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट, इट्स बीन प्लेजर, और वी होप कि आप जल्दी से रिकवर हो और आपका चैनल भी जल्दी से चालू हो वापस। गाइस प्लीज चेक आउट गुरुजी's चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और यूरोस कल से राउंड ऑफ 16 चालू हो रहा है, वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर दैट। गुरुजी इज सपोर्टिंग फ्रांस, आई एम सपोर्टिंग डेनमार्क। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये नया था, मैं अभी मुझे पता चला डेनमार्क। मेरा हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में टीम अलग होता है, क्योंकि इंडिया नहीं खेल रही है तो क्या मतलब, किसी को भी सपोर्ट करो, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, फिर वी विल बी बैक विद मोर यूरो कवरेज एंड होपफुली वी विल बी जॉइंड बाय गुरुजी वंस यूरो फिनिशेस। वी विल बी taking a look at whole tournament, which player stood out the most, which player disappointed, which were the dark horses, और कौन सी ऐसी टीम थी which failed to live up to the hype। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे गुरुजी के साथ यूरो के बाद। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ yourselves, टेक केयर ऑफ your families, like गुरुजी, get yourself vaccinated and don't forget to keep the blue flag flying high।